भाई जच रहे हो।
It's 19 hours. नमस्कार आप सभी का इस वेडनेसडे विजडम्स के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. टुडे इज द इनॉग्रल प्राइमर एज वी हैड सेड. So I would like to welcome the star, the protagonist of this entire series, Wisdom Wednesdays, Mr. Saurabh Kumar Pani. Saurabh is an alumnus of IIT Kharagpur, and also he went on to his managerial education. So he brings to the fore the technological objectivity and managerial subjectivity. So it's quite a phenomenal juxtaposition. And as we all say that IITs are known to be incredible institutes of transformation. So Saurabh does a day job of being a renewable energy professional, remains in a lot of analytics and data sciences during the day, and remains engrossed in all the pursuits around energy. And then he has developed his passion of retelling these incredible stories of the Indian lore. मैं कार्यक्रम के प्रभाव में I would also like to welcome one of a very eminent educationist who is here with us, in whose presence this inaugural primer is being taken forward, Dr. Jagdish Gandhi. He's the founder of the City Montessori group of schools in Lucknow and quite a magnanimous personality in his own right. So we welcome you, sir. आपके अनुगत्य में इस inaugural primer को हम आगे लेकर जाएंगे. तो जैसा कि हमने प्रस्तावना में आप सभी से कहा in the introductory notes, that Indian lores are quite universal and timeless, as Saurabh's tales would tell us. And he tells these tales in a very sporting manner. So he comes from this vantage point of a techno-managerial education from the finest institutions of the country. And then he has taken up telling these tales in his own characteristic style. हम लोग उस पर जाएंगे. पर इस Wisdom Wednesdays की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम लोगों ने कथावाचक storytelling, and as Saurabh tells that he is more of a story keeper. हमारे यहाँ परंपरा से कथाएं जो हम कहते थे कि दादी और नानी की गोद में बैठकर हम लोग सीखते थे, और वो कथाएं, वो जो उसके अंदर जो उसका जो भाव हुआ करता था, प्रतिपाद्य विषय जिसको कहते हैं, the core protagonist, the core concepts and precepts around, उसको हम बहुत ही सहजता से आत्मसात कर लिया करते थे. एक we had a very phenomenal tradition of storytelling in our families, क्योंकि तब ये स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे, and we were not very much glued to the external world. The house was an institution in itself. But yes, over the time, technology has brought about a lot of connectivity. आज के संदर्भ में जो हमने इसका core role रखा है कि today is an age of VUCA. VUCA started in 1980s. Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. जिसको US military ने इस term को coin किया in late 1980s. और उसके around उसको फिर बाद में business leadership ने after the end of the Cold War in 1989, fall of Berlin Wall, the business leadership also took it forward and started creating their own strategic and managerial interventions. But आज हमारी generation को, आज we are all seeing VUCA, an unprecedented VUCA in our own lives. For the last 1.5 years, we are all locked down in our own houses, and the world has changed phenomenally. जो परिवर्तन पहले शायद Dr. Gandhi is quite a veteran, तो he would tell us कि जो पहले परिवर्तन 10 सालों में हुआ करते थे, वो इन 10 महीनों में किस प्रकार से हो गया, और स्पेशली फॉर आवर यंग चिल्ड्रन, फॉर आवर यंगस्टर्स, फॉर आवर यंग फ्रेंड्स, कि 10वीं के और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स जो कि फर्स्ट और सेकंड पब्लिक एग्जामिनेशंस हुआ करते थे, वो एकदम से कैंसिल करने पड़े, स्थितियां ऐसी बन गई. और यह जो हमारी यंगफुल यूथफुल जनरेशन हमारे साथी हैं, in our times, like we had the World Trade Center 9/11, it was a sporadic issue. एक शहर में, एक दूर अमेरिका के एक शहर में एक कोई घटना हुई, उससे विश्व प्रभावित हुआ. पर यहाँ तो
भारत ही नहीं, पूरा विश्व, एक एक कोना इससे आंदोलित है, और द वे द वर्ल्ड हैज ट्रांसफॉर्म्ड इन इटसेल्फ। तो यहाँ पे एक दार्शनिक दृष्टि की आवश्यकता लगती है। जो वूका है, आज एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग पूरे देश भर के अध्यापकों से, प्राध्यापकों से संपर्क करते हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज दे आर saying that despite their best of the efforts, our younger lots are facing a bit of a challenge and crisis कि how to cope up with this VUCA। तो हमको लगा कि ये जो हमारी चिर पुरातन कथाएं हैं, जहां पे सृष्टि और प्रलय, जहां पे डीमंस एंड देवतास दे डू कोहैबिट, जहां पे कोई एक सत्य नहीं है, एक सभी का अपना अपना सत्य है। तो इन कथाओं के माध्यम से, एंड दीज स्टोरीज कमिंग फ्रॉम समवन लाइक सौरभ, हमने ये पानी उवाच इस सीरीज का प्रणयन किया है, एंड दिस विल बी डिलीवर्ड एवरी वेडनेसडे। This is what the plan is. And Wednesday in our own pantheon, it's known to be the day of Lord Ganesha, जो कि रिद्धि सिद्धि के प्रदाता हैं और बुद्धि को भी प्रदान करते हैं। So it's quite an auspicious day. Without further ado, and today is the inaugural primer. Today, Saurabh is not telling a story. So how it will go is that every Tuesday evening, Saurabh is an avid blogger, and we would just share the link of his blog. He writes phenomenally. We will be sharing a particular story, and then we will be taking it up. We will be narrating in this hour and a half kind of an interaction. और उस स्टोरी से जो सारे मुद्दे खुलते हैं, एंड द होल आइडिया इज, आज हम लोग डेटा साइंसेस की बात बहुत किया करते हैं। इससे पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हुआ करती थी, उससे पहले नॉलेज इकोनॉमी की बात हुई थी, बट द कोर क्रक्स ऑफ विजडम, तो ये चार जो लेयर्स हैं, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, just to impress upon ki what is the core difference between knowledge and wisdom. And as Saurabh says beautifully that knowledge is something which can be transmitted. We can go to a classroom, we can take a online course, we can go, but wisdom is something which dawns upon ourselves. So that becomes a personal truth, a personal revelation for each one of us. So much so far for the introduction of this Wisdom Wednesdays. I would just invite Saurabh to tell his part, and I would try to keep it more engaging so that all our viewers they can get a hang of it. तो सौरभ, ये पानी वाच, ये एनर्जी प्रोफेशनल से ये कथा सुनाने की जो पूरी कवायद है, ये जो तुम हर हफ्ते लिखे जा रहे हो, how it all started? Let's tell all our viewers who would be tuning with us in Wednesdays to come. Raghav, guys, I'll keep on moving in Hindi और English के बीच में, तो बात ही ऐसे करते हैं आजकल, हम तो English ही हो गया है. Raghav, when we started स्कूल में भी, फिर जब कॉलेज में पहुंचे, हर चीज नंबर में चलता रहता था. नंबर में है, फॉर्मूला ऐसे डालो, वहां डालो. Then I realized once in a while when we are trying to explain to each other, कभी कभी होता है ना कि तुमको पहले समझ में आ गया, दूसरे बंदे को कम बाद में समझ में आया. Then we always used to help. Then I realized कि भाई अगर सिर्फ नंबर में बोलते हैं ना, कुछ लोग समझ में आता है, लेकिन जब अगर कहानी में डाल के बोलते थे ना, ज्यादा लोग समझते थे, और समझाने वाले को तो मजा आता ही था, और वो ज्यादा समझ पाता था. बहुत एकदम बड़े ही सिंपल चीज है. कभी इकोनॉमिक्स की बात चल रही थी, बारे बहुत यहाँ वहां की चली, फिर मैंने बोला एक काम करते हैं, I was in a train, ठीक है, हम लोग we were discussing economics, तो मैंने बात तो बोला कि भाई एक काम कर, चल कील लेते हैं, है ना. And we started by saying कि what is a nail, and idea was what is money. तो उसमें मैंने बोलते हुए कहा था कि भाई ये something which is has a power to do work. और उसके बाद कहानियां बनती गई, and I did not realize, in fact if my dad is watching, you will know, I did not realize कि यार माइथोलॉजी हमारे अंदर इतना बस चुका था ना, क्योंकि लोग बैठ के सुनते रहते थे. तो आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग इन द स्टोरीज ऑफ माइथोलॉजी. देन आई रियलाइज कि हर बार जब स्टोरी बोलता हूँ, स्टोरी में हल्के डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन उस स्टोरी से मैं क्या बताना चाहता हूँ लोगों को, देयर वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आई एम क्या बोलते हैं, अंडरलाइनिंग, द अदर एस्पेक्ट को अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, राइट.
तो व्हाट इज दिस, देन आई रियलाइज कि स्टोरीज आर नॉट डेड थिंग्स, है ना, पार्थिव शरीर नहीं है, एक एक जीवित आत्मा होती है। अगर एक क्या कहते हैं, कथा में अगर आत्मा हो ना, जगदीश सर, राघव एंड माय यंग फ्रेंड्स, देन व्हाट इज हाउ डू यू नो समथिंग इज अलाइव? समथिंग इज अलाइव मीन दैट इट इवॉल्व्स एंड इट ट्रांसमिट्स। वायरस बोलो, इंसान के सिविलाइजेशन बोलो। सो अ स्टोरी इज अलाइव व्हेन यू नो दैट पीपल while telling to each other they want to tell to each other, right? अगर वो एक बार मैंने तुम्हें कहानी बताया, अरे भाई सुन एक बताता हूँ, हाँ क्या यार, आज ना सुबह मैंने सैंडविच खाया, किसको सुनाओगे भाई, है ना, है कि नहीं? a trivial thing, but a story which has some meaning behind it, a story which teaches you something, teaches me something, teaches Jagdish sir something, teaches Dhawal something, teaches Aradhya something, that is alive. जैसे कि आप राघव मेरे लिए कुछ और हो, अपने फैमिली के कुछ और होगे, है ना, अपने कलीग्स के लिए कुछ और होगे, तो स्टोरी इज आल्सो अलाइव। देन इफ अ स्टोरी इज अलाइव, देन समवन हैज टू कीप देम, राइट? समवन हैज टू कीप ऑन टेलिंग दोस स्टोरीज इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट फोरम्स, एंड आई बिकेम दैट गाय जो आया, सुनता रहा कहानी, लोगों की बातें, फिर बोले भाई एक कहानी सुनाओ, मैं हाँ तो सुना देता हूँ। And I realized instead of people saying, because I never included, I try never to include, in fact, आ जाता है religion into it. Stories, mythology is not about religion. Mythology is about, in fact, हमारे भाषा में तो हम बोलते हैं mythology is about धर्म। धर्म मतलब religion थोड़ी है, धर्म मतलब अच्छे कर्म है, धर्म मतलब सही जीवन है। Then let's go. So I could, in fact, a few of the friends whom I told us more stories. ठीक है, Titus, he's a Christian, Firdaus, he's a Mohammedan, and they used to discuss the stories with them, like, and that's the fun part. So शुरू कर दिया भाई, and as I told you, keep on telling you every time, यार मैं story teller नहीं हूँ भाई, मुझसे better storytellers हैं. I'm trying to be just a story keeper, and I'm trying to tell those stories which I feel about, I know a little about. And one more thing was, in this lockdown, a lot of our friends started talking to each other on WhatsApp or Telegram. उनमें से a few of the friends are saying, यार मेरे बच्चों को ग्रीक मतलब सब आती है, यार इंडियन मतलब आती नहीं है. And then they thought that, यार सौरभ तू बता कोई किताब है क्या? अच्छा, कोई किताब है क्या? मैं बोला किताब उतना तो पता नहीं है. I can tell you a few books like किसारी मोहन गांगुली जी के का ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, द फुल महाभारत, इट्स एन ऑसम बुक, लेकिन वो बच्चों कैसे दे पाएंगे? तो मैं कि एक काम करो भाई, मैं लिख लिख के भेजता हूँ. Then started that. So this particular interlude is because a few friends said कि उनके their kids could read by reading Percy Jackson और Rick Riordan में, भाई ग्रीक मेथोलॉजी जब पूरा रट चुके हैं, इजिप्शियन मेथोलॉजी घुस चुके हैं, नॉर्स में आ चुके हैं, इंडियन पहुंच नहीं पा रहे हैं. तो कोई बात नहीं यार, चलता है ना, because if you see Greek mythology, because it's not connected to any religion anymore, a live religion anymore, it लोग सब जानते हैं भाई कौन है जियस. हाँ भाई सही है, जियस कहीं भी आ जाता है, थॉर तो मूवी में लगा है. यार हमारी स्टोरी, like because people kind of keep away from religion, okay, it's your requirement, चाहो तो नहीं रखो religion के पास, but these stories can teach you something. May I help? May I try? I'm trying that. In fact, कभी-कभी बोर भी कर लेता हूँ भाई. तो सौरभ एक जिज्ञासा है, जैसे तुमने कहा कि आईआईटी में जाके तुमने फैक्ट्स ड्रिवन स्टडी की, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एवरीवन हैज टू कम टू अ सिंगल आउटकम. There are IEEE standards, there are a lot of protocolizations, everything, right? So that is very objective truth. And when you went to the IIMs, it's all about the subjective truth. The same product, the same brand, its positioning has to be put all across, right? So अभी तुमने एक बात कहा कि हम लोग इस विषय पर आएंगे कि क्या ग्रीक माइथोलॉजी और इजिप्शियन माइथोलॉजी में और भारतीय जो फोल्कलोर्स हैं, हमारी जो पौराणिक लोर्स हैं, उसमें फर्क क्या है. तो वुड यू लाइक टू टेल टू आवर यंग फ्रेंड्स, बिकॉज सी ये जो पूरा कार्यक्रम हम लोग प्रयास कर रहे हैं,
ये इसी प्रकार से कर रहे हैं कि ये केवल स्टोरीज ही नहीं हैं, इन स्टोरीज के अंदर कुछ बहुत ही गहरा ज्ञान, जिसको हम अंडर कोट्स कैंपस की भाषा में, अरे भाई क्यों ज्ञान फेंक रहा है, पर वो ज्ञान की जो बात है, बिकॉज दैट इज वेयर सम ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, जो लाइफ के लेसन्स हैं, वो हम टच अपॉन, वो हम फील कराना चाहते हैं. दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज ऑल अबाउट. तो जैसे मैनेजमेंट स्कूल में केस स्टडी मेथड इवॉल्व हुआ कि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझाने के लिए the management graduates is all started from the Harvard Business School, and then all the IIMs are, so there is a case writing, there is a case study. तो तुम क्या ये कहोगे कि ये जो हमारी परंपरा रही कथा कहने की, क्या ये विजडम को ट्रांसमिट करने का एक बड़ा ही साइंटिफिक और एक बहुत ही कोडेड वे है? व्हाट इज योर से अबाउट इट? In fact, if you see, quite a few stories in different Purans have a different version of it. Okay, maybe because that's that was you said a case study में जो कौन सा underline कोई और पार्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल सिम्हिका, जिनको हम सब जानते हैं नाम से होलिका के, she is seen as the one of the basically daughters of Diti and Kashyapa, basically sister of Hiranyakashipu and Hiranyaksha. But in Bhagavad Puran, in one part, she is said as a daughter of Hiranyakashipu. It's because the stories keep changing. So but because उसमें एक कुछ अलग केस तरीके की जरूरत पड़ता है. And by the way, just in case, MBA में भी यार ऑब्जेक्टिव काफी होता है. And what it also gives you tools. So one of the tools in that was the storytelling through data. So अब कभी-कभी in fact guys, anyone of you who have seen the site, उस साइट के सबसे नीचे में मैं डालता हूँ there is something called a tag cloud, कि किस चीज को कहाँ कवर कर रहा हूँ. There is a tag I keep on using, it's called stealth philosophy. भाई आपने सही बोला, अरे क्यों ज्ञान दे रहे हो? अब लोग ज्ञान देना शुरू करेंगे, जैसे अभी दे रहा हूँ, लोग निकल जाएंगे. यार कहानी में अगर आप चुपके से आ गया और वो पसंद आएगा, तो इसको स्टेल्थ फिलोसफी. तो पता कि मैंने कि गुरिल्ला ज्ञान है, G2 कहते थे, गुरिल्ला ज्ञान या फिर स्टेल्थ फिलोसफी. सो in fact mythology is the mythology which hit us harder, which we remember more, are the ones which have stealth philosophy in it. Okay, so अभी बताए ज्ञान डायरेक्टली देते थे लोग नहीं सुनेंगे. चलिए अपन कथाओं पे आएंगे. सौरभ, बड़ा अच्छे से तुमने बताया ये कि yes, obviously there is a lot of objectivity in the management education as well, no doubt about it, but that was again an anecdotal truth we all take, a subjective truth from our own perspectives, right? So ये बताओ कि what between, because ये बड़ा जरूरी प्रश्न है, क्योंकि आज ये है कि ग्रीक माइथोलॉजी, इजिप्शियन माइथोलॉजी विज़ द इंडियन माइथोलॉजी. मैं माइथोलॉजी अंडर कोट्स यूज करता हूं, एंड वी ट्राई टू यूज द वर्ड इंडियन लोर्स. कथाएं हैं हमारी, जो जैसे भाषाएं और बोलियां हर 5 या 10 गांवों के बाद बदल जाती हैं इस देश में, तो ये कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं. तो क्या मूल फर्क तुमको लगा ये वहां के सिविलाइजेशंस में और हमारे भारत के सिविलाइजेशन में? मतलब अपार्ट फ्रॉम अ नेशनल पर्सपेक्टिव, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द कोर डिफरेंस? अगर इफ आई जस्ट आस्क यू. वन कोर डिफरेंस इज we feel more comfortable in this. तो ये है. Okay. There is one more, is that who is the head of the pantheon? In fact, how the god heads, है ना, small god, small g, capital G नहीं बोलते हैं ना, है ना, small g. The godheads in a or demigods, जो बोलते हैं ना, in a mythology, tells you exactly what kind of civilization we are looking at, or what is important for them, right? See, for example, in a Greek mythology, the god is a father, है ना, and a god who क्या बोलते हैं, who is the gods there are like humans but worse. But they can be they are like, but मैं पिता हूँ, मैं जो बोलूं वो सही है ना, I am a god, जो मैं कर रहा हूँ सही है. In Indian mythology, gods can be wrong and they have to realize that they are wrong. इंद्र बार बार गलती करता है,
Indra is similar to a Zeus, right? But Indra keeps on realizing that he made a mistake. He's told that he's made a mistake. He repents for it. He does penances for it. In fact, there's a story कि इंद्र ने जब वृत्रासुर का वध किया, he used some amount of छद्म, है ना, भल, मैंने कि not the word. So he actually went and did penance, and then he had to do 100 Ashwamedha yajna to again come back to become Indra. So even a god can make mistakes is something which only Indian mythology can give to us, because we respect our elders, but our elders also say कि यार हम गलती कर सकते हैं, and they can accept that. That's a difference, है ना? कि that's one This big is quite difference. a core, very core difference, I think. ये गलती इंसान क्या है, गलती भगवान भी करता है, लेकिन गलती से वापस आए वही इंसान है, गलती से वापस है तो भगवान है ही है. I think ये पहली wisdom आज की अगर हम कोट करें कमेंट्री उसमें कि the first wisdom of the first wisdom Wednesday कि गलती करना गलत नहीं है, पर उसको रियलाइज करना, उसका पश्चाताप का जो परंपरा है. And just a thing कि वैसे सौरभ writes very well in English, in chaste English, and he has tried to narrate these stories in a very I would say his writing is quite dense, and you would all just go to his blog over there on your screens. You will see this hyperlink, and just read it all at leisure. It's quite a advanced level of writing, and it will really require an effort because some intricate concepts, they need that finesse of the language. It is not cosmetic. प्रतिपाद्य विषय ही इतना गंभीर है, इतना गहरा है कि भाषा का दारिद्र्य it just cannot fathom it. So, and that is the whole purpose, and the purpose behind this series is कि भारतीय परंपरा को अगर समझना है, the Indic paradigm, it has been more of an oral tradition. दादी से, नानी से, घर में दादा से, नाना से, बड़े लोगों से हमने कथाएं सुनकर, because hearing is quite central to our tradition. तो आइडिया यही है कि we will read through before or after, and Saurabh would narrate a story. क्योंकि आज ये पहला एपिसोड है, we just wanted to tell what we are going to do and why we are going to do. The why of it is very essential. तो सौरभ अगले 10 वेंसडे के लिए हम लोगों ने कम से कम साइन अप किया है कि लेट्स illumine our youngsters with these nuggets of wisdom every Wednesday. तो एक एक करके इन कथाओं को एक बड़ा sequential structure है. There is a code, inherent code also in these 10 stories. So when it comes from a Saurabh Pani, you can understand that obviously वो technology और management का juxtaposition होना ही है, तो random chronology नहीं है. तो सौरभ शुरू करते हैं क्विकली एक स्नैपशॉट में कि ये 10 जो स्टोरीज हैं ये कैसे आगे बढ़ेंगी और मुद्दा क्या है इसमें. कोर फिलोसॉफिकल प्रिसेप्ट. हमारे यंगस्टर्स कहते हैं यार फिलोसॉफी वो सो बोरिंग है, बट जब हम लोग पढ़ाई लिखाई करके प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाके और लाइफ के एक अलग मुकाम पे पहुंचते हैं, तब जरूरत पड़ती है कि भाई व्हाट इज द फिलोसॉफिकल ट्रूथ ऑफ लाइफ टू हैंडल the kind of VUCA, the whole complexity, the whole volatility, उसको कैसे हम handle करेंगे. That is what managers do, that is what leaders do at various stages. तो उद्देश्य हमारा ये, we will try to bring back again and again. कथाओं का अर्थ तब तक नहीं है जब तक वो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन ना ला सकें, हमारे लिए वो टूल्स और टेक्निक्स ना बन सकें. तो हम लोग थोड़ा यूटिलिटेरियन होंगे, केवल कथा सुनाने के लिए कथा नहीं है. इन कथाओं में इंगित करेंगे, रेस्ट इज ऑल द विजडम विल डॉन अपॉन यू कि हाउ विल यू यूज दोज कॉन्टेक्स्ट, दोज ऑल एरियाज. एंड सौरभ हैज ब्यूटिफुली नैरेटेड इट, बट जस्ट टू डीकॉम्प्लिकेट इट, वो जो डेंस राइटिंग्स हैं दे शुड मेक अ सेंस. तो इसीलिए हम लोग थोड़ा उस अर्थ को लूज करेंगे इन इंटरैक्शंस में. आई वुड जस्ट कम ऑन एज अ विलेन कि भाई इसको समझा दो, ये शब्द का अर्थ क्या है, इसका इस फ्रेज का अर्थ क्या हो रहा है. तो सौरभ, लेट्स गो अहेड विद द फर्स्ट वन. हु स्टार्टेड दिस स्टोरीज? ओवर टू यू. See, as you said, who started story is kind of echo आ रहा है शायद. Okay, just fine. Okay, someone has, yeah, it's perfect. Please mute yourself. Yeah. Who started story is basically giving you क्या
I will give you a sort of unmute yourself. Okay, no worries. What I was saying is, who started this story tries on an overall बोलता है कि भैया हमारा बोलते हैं ना 33 करोड़ गॉड्स हैं, है ना, स्मॉल जी वाले. आई ट्राई टू काउंट आउट कि वो 33 करोड़ की 33 हैं. उसका आई गिव एन एग्जांपल, बेसिकली द नंबर ऑफ गॉड्स. बट इन व्हेन दे सेइंग कि हेलो बोलते हैं ना, ये स्मॉल जी होता है कि कैपिटल जी, मतलब क्या होता है? तो कैपिटल जी हमारे में होता है द त्रिदेव. Then in that we explain that कि त्रिदेव कौन-कौन है, and some very less background, क्योंकि it's just enumerating. Then we realize कि if you think of it, we have 3 बोलने के हैं त्रिदेव, और पूजा के लिए भी 3 अलग हैं, है ना. हम पूछते हैं and we are to 3 different, like Brahma, Vishnu, Mahesh is the त्रिदेव which we say in the names, in the name. But when we worship, it is not Brahma, it is Vishnu, Mahesh and Shakti. है ना. And then the concept about the prakriti versus purusha ka, there's a discussion on that. So to understand the base, a few of the main characters who keep on coming, one do you try lay to the foundations of the Indian pantheon in this first story? Okay. In fact, in that I had asked my few of the friends whom I had given these links that can you just give your interpretation of that. So one of my friends actually made a beautiful image, a painting, a proper 4 panel का painting बना के दिया था, in which that the Brahma, Vishnu, Mahesh are there, and she made a Soumya is the name of the artist, made a like Prakriti को as a bale, and which is it is in a infinity sign, spiral, and that is supposed to be Prakriti, because there is no fixed image for Prakriti. So that was the image. So I got that image, and I, with her permission, I'm using that also in the blog. So in fact, whenever people read, unka jo interpretation hai, if they have some artwork to that, they can give. I can put that, because that gives, because words kya bolte hain, I can write 1,000. In fact, each of my posts are about 1,500, 1,700 words. लेकिन अब picture is a word 1,000 words ना यार, 1,000 words और डाल दूंगा, है ना. So that is the there. So basically this is talking about the pantheon, and basically बोलते हैं ना, start करने से पहले भैया main star cast, है ना. मूवी में अमिताभ है, शाहरुख है, बोले भैया डाल देते हैं. तो इस मूवी के main star cast क्या है? That's why it started with who started these stories, है ना. Actor, director, producer जो भी है वो बता दिया, है ना. Then when we went to the then I realized कि even these are not the only people. So then I started to think of it कि even then I use the words who started it all, but there's something called a creation mythology, how it is created. Mythology by the way means does not mean झूठ, myth, मिथ्या नहीं है. किसी ने बोला है भाई अच्छे इंसान है, ठीक है. myth मतलब मिथ्या नहीं है, myth मतलब स्टोरी होता है, है ना. love of story and study of stories. So in our mythology, what is the idea of creation, and is the creation one time or multiple times, multiple layers? So उसके बारे में बोला था. In fact, I had told you earlier, I am a fan of one thing about this. They I think the ये नए जनरेशन को शायद नाम मिले, हमारे जनरेशन को, सर को शायद वो याद हो. सर भारत एक खोज एक आई थी हमारे बचपन में, एक टीवी में आ रही थी. उससे स्टार्ट में ना नासिदे सूक्त का उच्चारण होता है, संस्कृत समझ में आती नहीं थी. उसके बाद वो हिंदी में बोलना शुरू किया. तो जब पहली बार बचपन में सुना ना, इट हिट मी सो हार्ड कि इट सेज पृथ्वी से, अरे यार ये भगवान तो, हाउ कैन दिस गॉड्स मेक दिस अर्थ, बिकॉज दे केम आफ्टर द अर्थ. माने अरे चूचपा जब हिम्मत देख भाई, उस समय लोग भगवान से डर के छुप रहे हैं, भगवान जो करना करिए, मतलब भाई आपने तो नहीं बनाया, है ना. ये बोलने का चूचपा है. और ये बोलना कि यार इनफैक्ट जो उसके भी ऊपर बैठा है, क्या उनको पता है कि उनको नहीं पता है, क्योंकि उनको क्या पता है और हमको नहीं पता है. सो दैट वाज द स्टार्ट कि क्रिएशन, द आइडिया ऑफ एम्बिग्यूटी, वो कब है ना, द एम्बिग्यूटी का बेसिक, एंड बीइंग ओके विद एम्बिग्यूटी इज व्हाट नासदीय सूक्ता इज देयर. I gave a link there also that people can go and listen to that, the song. In fact, and then we came about the different levels
of in fact last जो हमने वो Saturday we had connected, you had actually used that message ki Adi Shesha. This is a very interesting concept. Guys, think of it. A single character is called the remainder or Shesha. He's also called the start, the Adi, and he's also called the unending, Ananta. And he's not even the main character. Shesha Nag, Adi Shesha, Ananta Nag. Same person, same character. So that's a beauty. In fact, he's the idea of time. तो उसके अनुसार क्या मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि इन विजडम वेडनेसडेज में प्रतिभागिता के लिए अपनी हिंदी की कक्षाओं को थोड़ा सा मांझना पड़ेगा, because a lot of these concepts are quite original. They don't have a translation. Recently there has been a lot of movements about Sanskrit originals. तो बहुत सारे ऐसे precepts हैं, concepts हैं, and these are the times of concept based learning where language, any subject is just a set of certain closely knit concepts. हम लोग keywords उस subject के पढ़ते हैं, उसके आपस में interactions पढ़ते हैं. तो for all you to make sense of it all, and जिस प्रकार से सौरभ ये समझाने जा रहे हैं, the characters of the Indian lores, बहुत कुछ तो हमें परंपरा से वो ज्ञान प्राप्त है, but try to be patient because this will be non-linear. ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा नहीं है. एक घुसा तो उसका एक ट्री बन गया, फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट आया, उसकी अनंत कथाएं हो गई. तो this is a very majestic way, and we will keep on understanding that even some of the most modern researchers are using these pedagogies for really abstracting out the complexity of the universe today. तो ये जो mythology जो term use कर रहे हैं हम लोग इस program के लिए, we are using is the Indian lores, हमारी कथाएं, which have variations, और every कथा is equally acceptable. Characters में minute variations हैं. तो ये सब्जेक्टिविटी है इस ट्रुथ की. ये 2+2 = 4 जो हमारा प्राइमरी या मिडिल स्कूल या इवन क्लास 12 तक का एक बड़ा फिक्स्ड नोशन रहता है कि इनपुट और आउटपुट में बहुत ही साम्य रहेगा, वही रहेगा, प्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी. दैट इज नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. हम लोग बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर आउटकम जब आता है तो इट्स अ फंक्शन ऑफ लॉट ऑफ आई वुड से इन फ्रंट वेरिएबल्स, लॉट ऑफ हिडन वेरिएबल्स आर आल्सो देयर. तो थोड़ा पेशेंस के साथ इसमें कथाओं में रस भी आएगा. सौरभ बड़े रसीले प्रकार से कथाओं को सुनाते हैं. परंपरा में तो हमारे घर में जब पारायण हुआ करते थे, रामचरितमानस हो रहा है, भागवत महापुराण का पारायण हो रहा है, शिव महापुराण का हो रहा है, जिसके घर में जिसके जिस space में whatever the traditions are, today we have got a different paradigm. So I just wanted to create the base, and mind you that we are not here to lure you in some kind of an otherworldly pursuit over there. So we also invite your parents to join in, because कई बार क्या होता है कि कई कठिन सिद्धांतों को हम दृष्टांत के माध्यम से, from a simple story, we can put up that concept, that precept into a young mind and heart. तो कई लोग जैसे आजकल कहते हैं कि पेरेंटिंग को इनडायरेक्ट करना चाहिए, कि कहानी सुनाकर कुछ अगर आपको प्रबोधन करना है, you have to instill some good virtue and value, so it can be done through these stories. So this is the whole introduction part. Yes, the characters are interesting, and Saurabh is an expert over there. He will just weave one character and he will then present another character, and then you have to interrelate, correlate, whatever. So let's move on. Yeah, Saurabh, over to you. हाँ, तो how it started and grow में after that हमने जो main gods किए थे, then we realized there are few more divine equations. By the way, there is nothing called demons in Indian mythology. Okay. Lore में नहीं है. दैत्य का मतलब ये नहीं कि डरावने, दैत्य का मतलब है दिति के पुत्र. तो then basically one of the main fathers, है ना, जैसे कि ब्रह्मा से आए different, we can read that, we can discuss it further. Then I try to say कि by the way, how can you decide who is a good or bad? There are different sides of it. कि एक जो देव हैं, जो they are called आदित्य, अदिति के पुत्र, and then a दैत्य जो कि दिति के पुत्र. In fact, then I realized कि और भी wives थी, दानव, दनु के पुत्र,
है ना? तो इन एंड देन आई गिव द डिफरेंट अदर द डिवाइन लाइन जिनसे हु आर द मेन characters or side characters in the stories other than the mortals. These are the immortals, basically the immortals बोल सकते हो. So then I talked about that. So I covered in the second one is basically how they start and grow, basically different levels of creation. We can and there हर एक कुछ interesting चीजें हैं. I always try in every post at least one thing जो कि lesser known है बता दूं. कुछ नहीं ना, ट्रिविया में किसी और को बात करते रहे, कुछ कहानी सुना दो, है ना? They will get interested as well. Then I realized कि even then there are so many versions. Why are there so many versions? कभी मनु को बोलते स्वयंभू मनु, फिर बाद में सत्यव्रत मनु, फिर सद्धदेव मनु. भाई ये कहाँ से आ गया, है ना? Then I realized कि actually we have idea of cyclicity. That idea of cyclicity बहुत नंबर है इसमें, है ना? मेरे अंदर का मतलब कि इंजीनियर जाग गया था, तो बहुत नंबर डाल दिए, बड़े नंबर, and writing down the numbers in words, क्योंकि it gives billion trillion बोलने में मजा जो आता है ना, तो वो उसके अनुसार डाला कि भैया क्या होता है. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स कि जो मेरे लिए पूरा साल है, उनके लिए भगवान मतलब कि देवों के लिए एक दिन है. उनका जो पूरा साल है वो भी उसके अनुसार इतने सारे में वो सब कुछ होने के बाद एक कल्प आता है. वो कल्प ब्रह्मा का एक दिन है. ब्रह्मा जगते हैं, सब कुछ होता है, फिर सो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है. एंड कीप्स ऑन हैपनिंग. एंड देन जस्ट इन केस मुझे लगा कि हैप्पी बर्थडे बोल लेते हैं कि ब्रह्मा जी का 50वां साल हो गया है. So that was the thing where how old is creator. That's why because I connected everything with the age of the creator or Brahma. तो उसके साथ numbers डाले. By the way, these numbers have one more meaning कि cyclicity है. बार बार हो रहा है, बार बार होता रहेगा, यहाँ हो रहा है, कहीं और हो रहा है. तो it may not be true कि यहाँ पे जहाँ पे देव और दैत्यों में देव जीते दैत्य हारे, तो देव अच्छे हो गए, दैत्य पूरे हो गए. किसी और में देव हारेंगे, दैत्य जीतेंगे. इनफैक्ट अहुरा और दैवा जो there's a story in the Parsi Zoroastrian, ये there is a similarity in that as well. So the idea is cyclicity है. Every time someone else wins, every time someone else can be in the side of the good. तो ये that which our stories have that. तो वो उसमें लाने की कोशिश किया with numbers, lot of numbers. Okay. कैलकुलेटर लेके बैठना, पेपर पेन कैलकुलेटर लेके बैठना, मजा आएगा. जस्ट थोड़ा यूटिलिटेरियन होना भी हमें पड़ रहा है कि ये जो नंबर्स तुम बता रहे हो, तो क्या ये जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग 11वीं 12वीं में मगते हैं, घोटते हैं, इंजीनियरिंग के बाद तो जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती, ये जो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है, ये जो शून्य का कॉन्सेप्ट है, डज इट रियली हेल्प यू टू मेक अ फील ऑफ इट ऑल? क्योंकि हम बहुत ज्यादा तो ये जब पढ़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तकों में, तो इट्स मोर अबाउट एन इंटेलेक्चुअल परस्यूट कि ये सिंबल है, इट गोज ऑन. बट ये जब आप कथाओं के माध्यम से सिखा रहे हो या बता रहे हो, तो कैन यू कोरिलेट दैट विद दोस ऑपरेटर्स एंड ऑल? जी, एक चीज बताता हूँ, दिस में साउंड ऑलमोस्ट लाइक हेरेसी. ऑल दीज नंबर्स आर फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, सो दैट पीपल कैन रिमेम्बर. देखो भाई, गुड गुड गुड, 10 अवतार में 10 क्यों है? इसलिए कि और कोई अवतार नहीं है. देयर आर मेनी मोर अवतार, कहीं 24 हैं, कहीं 500 हैं. यज्ञ अवतार भी थे. लेकिन हम हमेशा इंपॉर्टेंट 10 अवतार क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे उंगलियों में कितनी उंगलियां हैं, हमारे हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 10. इजी टू रिमेम्बर. इवन इफ यू सी द वे इट इज बीन सेड, या तो 10 बोलते हैं, या 5 बोलते हैं, या 4 बोलते हैं, या फिर 3 बोलते हैं. सी विच इज द मोस्ट इजी टू, वाइल कोई बात कर रहा है ना, उसके बात करने में when he uses his gestures, especially people who like me who do not have a very good storytelling style, we use a lot of gestures. In these gestures it should be easy for them. Stories, as I told, stories have to be live. Stories people should be able to tell again and again and not make too many mistakes. So the numbers are like that, which also teaches one thing, ki sometimes for you to send out a information from one place to other, to send out a message, the message should be something which is easy to grasp, and then the next person can pass it along. Chinese whisper ना हो जाए, है ना?
भाई अगर अगर बोलते हैं भाई कितना अवतार है, 13 अवतार है, आपको पता 13 नहीं है, 12 अवतार है, भाई देखो 10 अवतार बोले गए. Keep it easy, right? And even if you go through that, we'll go to that. Even the numbers, the huge numbers, which I think kalp mein I ended with kitna 311 trillion 40 billion human years. I ended with this number. इसके आगे छोड़ दिया. इसके आगे बोला कि ऐसे 50 मैंने कि हो गया 311 trillion 40 billion human years. ठीक है? Is equal to 1 day of Brahma. But even then, if you see the way the numbers have been crafted, they are crafted very beautifully, easy to understand by simple jumps. भैया एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 नहीं, 360 होते हैं. क्यों? इन इंडियन में हम लोग बोलते हैं अधिक मास करके करते हैं, राइट? 312 आदित्य हैं, 12 महीने हैं, हर महीने में 30 दिन होते हैं, और जो 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं, छठे साल में एक एक्स्ट्रा महीना ऑफ 30 दिन डाल देंगे. कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लिसिटी से सिंप्लिसिटी दिया है ना. 365.1.25 वो है, वही भाई कॉम्प्लेक्स है. There's a simple way of doing that. That's what. And if you see the numbers, and is it too different from the truth? Is it too different from the exact number which people give? No. But is it easier to remember? Yes. 12 गुना 30 360 5 मतलब कि 6 साल पे एक एक्स्ट्रा महीना ले लो 365 ऐसे. That's way. So इसमें नंबर का थोड़ा गेम भी है. नंबर, I like numbers, right? And it takes me home. Oh, by the just in case, I had to tell this. These all are in my personal capacity. दो राघव है kept on telling कि मैं कहाँ क्या, मैं ये यार ना ये इसमें IT का कोई हाथ है, ना इसमें IM का कोई हाथ है, ना मेरी कंपनी का कोई हाथ है. इसमें I'm telling this in my personal capacity. Okay. So the how only the criteria is the numbers, and I was telling that sometimes complexity starts from simplicity. If you remember the simple things, the complex things become easy. In fact, कभी try करना स्कूल में, physics में भी, all the complex formulae they come from a very simple theorem. अगर वो theorem पता है ना, formula आप हर बार आप you can extrapolate, you can actually derive those formulas. So the numbers, the complex numbers, but try to keep on धीरे आप देखोगे उसको, when we go through that, if you read it, ये simple number शुरू किया, उसमें अच्छा ये करो. Every step is simple so that you can reach the complexity. Start में बोलता कि भैया 311 311 trillion 40 billion human years is 1 day of Brahma. तो क्या बात कर रहे हो, रहने दो, आगे बढ़ो. Start करते हैं. एक दिन क्या होता है, एक साल क्या होता है. So the way of complexity is you should not run away from complexity. वुका में C था, पहले हमने ambiguity की बात किया, चीज की consistency. वुका में C है, complexity होता है, but complexity has to come from some simplicity. Keep your eye on the simple thing, and then slowly, as and when you can grasp, then go to complexity. If you jump on complexity, the complexity will jump on you. Okay? So that's there. उसके बाद then one of my readers commented कि सर mythology में होता है तेरा अवतार ये बताना. And I kept on saying अवतार कि ये comment डाल दिया था कि अवतार are very important in there. So I started working on the avatars. So fishing in troubled waters is about the first avatar. Try to say something interesting, what the avatar meant, what is the thing which can learn from it. वो उसमें है. When that time comes, we'll come to that. ठीक है. Then the Kurma avatar, which people do not explain to a lot, I found it so interesting that it went into 2 layers, 2 posts. Okay. The churning the sea and the Gulf. Why and how the sea was churned, Sagar Manthan, which I last time started बोला था ना कि about patience, time and ambition, है ना? Then that's the story. There's the churning the sea. Then the gift of turtle. And by the way, interestingly, each one of these are also Genesis myths. I have a theory, and some more people, much more learned people have the theory. These all were separate stories about a different kind of people, a different group of people said, this is how the world started. But then slowly it got amalgamated into a single. So this became one more story. So if you see how creation is done, or Genesis, जैसे कि if I tell you there's a story of a very learned guy with a few people and a lot of animals, and the beach went on a huge
ship or an ark, है ना, and there was a lot of water fell, and when the waters receded, they came down and started simulation. You'll say, अरे यार ये तो book of Genesis है. भाई ये book of Genesis नहीं है. This is also a story, one story in our mythology as well. मत्स्य अवतार यही है, है ना, ठीक है. तो वैसे ये churning of the story, like people went, there are stories in Greek mythology कि basically the Neptune है ना, वो पानी वाला, कि he is the father of horses, because उसे horse का जो वो जो wave का जो waves sometimes look like a head of a horse, right? हमारे भी पानी में से horse निकला था, उच्छैश्रवा. उसका एक नहीं, he has more number of heads, because when we looked at the waves, they said no, there is not a single head. If it is a horse, there is multiple headed horse. So all these stories are there. So gift for a turtle is a different gift which came out. उसमें एक interesting tidbit छोड़ा है, कभी मजा आएगा देखेंगे, जब पहुंचे तब बात करेंगे कि क्या है कि are these gifts ये रत्न है कि it is telling us something much more deeper, है ना. In fact alliteration बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं यमक अलंकार, है ना. तो यमक अलंकार का बहुत अच्छा इस्तेमाल है कि a single word, माने कि a single word, ना homonyms, है ना. A single word can mean many things. So it is said this thing came out, but what does this word mean? तो उसमें भी एक interesting है. We go there. Then we realize कि अभी हम काफी दिन से बोल रहे हैं यार विष्णु अवतार कर रहे हैं. We keep on telling about Adityas and Daityas. Then I realize Kashyapa, in fact, interestingly, Kashyapa also means Kachapa, which also is a Kurma. So वो भी एक connection है. Then I found that we jumped for a simple fact कि there are more wives and more sons and daughters of Kashyapa, the divine individuals. तो उसमें से एक कद्रू और विंता की कहानी I find it very interesting. Not told too many times. There was ऐसे बोलते, अगर बताओ, दो बहनें थी, दोनों बहनों की शादी जो हुई, उनके बच्चे हुए. एक बच्चे एक माता के बच्चे हुए सांप, और एक माता के बच्चे हुए ईगल. वाह, कहानी तो इंटरेस्टिंग है, हो सकती है. And there are so many things, like this story also tells ki how Lanka came up. A theory. One of the stories how Lanka came up. A very interesting thing that Lanka came up from the bottom of the sea. Very good. But why did it come from bottom of the sea? उसमें भी story बनाई हुई है. वो इसमें है. वो we left it that. So this was, and in fact, interestingly, this story was, I found it so interesting, or I try to keep it not too long. जैसे कि अभी बराबर बोरा बोल चुका है, भाई बड़े लंबे लिखता है, बड़े complicated लिखता है, तो I try to keep it smaller. So I broke it into 3 parts. Okay. So it was sisters who don't like each other. तो इसमें उन sisters की लड़ाई थी. फिर क्या हुआ, लड़ाई से problem क्या हुआ? And we learned one person had a problem of one bad habit, another person had a problem of other bad habit, and these 2 bad habits caused them trouble. The bad habits were simple: impatience. If you have impatience, it will come back to haunt you. ठीक है? Especially when Kashyapa or Kachapa is about patience. है ना? And the other thing is, if you try to trick other people to gain for yourself, trickery for self gain, it is not a strength, it's a weakness, because for that not just you, your family will suffer. So that's the story there. Then one flew the heaven's nest is when Garuda went to heaven. अच्छी स्टोरी है. अगर मूवी बनेगी ना तो ये दबंग लेवल की बनेगी. प्रॉपर है. माँ पे अत्याचार हुआ, बेटा बोला माँ मैं जाऊंगा, लड़के आऊंगा, तेरे लिए कुछ लेके आऊंगा, लेकिन उसने जिसको हराया वही बोलते भाई तू तो कमाल है. मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर मूवी टाइप का है. अरे ये मेरी कहानी मैंने नहीं बनाई है, ये कहानी लिखी हुई है ना. तो उस कहानी को आई ट्राई टू ब्रिंग आउट एंड देख लो तो अच्छा, इट्स मूवी नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, कोई और बना देगा. इनफैक्ट गरुड़ा, इट्स अबाउट गरुड़ा, एंड द लास्ट इज द ईगल लैंडेड बट द वल्चर्स फ्लू. व्हाई? बिकॉज एक इंटरेस्टिंग चीज है. चलो ये बताता है.
we know these are well known. There are, if you have been in India, there are few names of जाने आता है. Garuda, right? One. Second is Hanuman, Sugriv, Wali, है ना? And then there's a Jatayu. और उनके एक भाई थे, उनका नाम लोग ज्यादा जानते नहीं, नाम है संपत्ति. इंटरेस्टिंग चीज ये है, these all are connected by family. मैं क्या बात कर रहा हूँ भाई? Eagle, vulture and Vanar, they are connected. They are connected. And a very beautiful connection. I call it beautiful because they have some interesting things which say about ambiguity and volatility. है ना? Because it is an interesting thing. ये बताओ, सुबह जो होती है और जो शाम होती है, तो एक अरुणिमा आती है, अरुणिमा, है ना? रेडिशनेस आता है. Is it male or female? है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो इसलिए that particular thing is not Surya, that is Aruna. If and many of the Aruns who are all around there, they don't know the meaning where it's coming from. Aruna is male, Aruni is female. So Aruna as a male can be a father to some, and Aruni as a female can be a mother to many. So that is a story, and it's like वुका तुमने बोल दिया भाई अपनी तरफ से, बड़ा डरावना शब्द है, लेकिन ये तो इंटरेस्टिंग है उसमें. And this is a story. If I am not that imaginative to make these stories. These stories are coming. I am a story keeper. Storyteller अच्छा नहीं बन पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ. So then we come to the वो eagle landed but the vultures flew. So I try to connect with that. And interestingly, I also put a point कि भाई एक और बताओ कि why Hanuman was moving around with Sugriv. Nobody asked me भाई why, what was this thing? तो उसका भी है. सुग्रीव हनुमान के मामा लगते थे. हाँ ठीक है, पढ़ो मजा आएगा उसमें, है ना? और मामा, ये बताओ हर किसी को मामा जी के पास रहना कितना अच्छा लगता है ना? ठीक है, तो वही है भाई, हनुमान जी अपने मामा जी के पास थे. So I think this is a lovely, कहते ना कि कथाओं की कथा आज हुई कि क्या कथाएं अगले 10 बुधवार को हम लोग रखेंगे. 10वां वाला बुरा नहीं भाई देवे, 10वां वाला I said because that is the 10th story is the introduction to the next stories, because 10th story is about 2 gatekeepers. तो 9 कथाओं को लेकर 9, see in Indian pantheon every number, every numerology has a 3 है, 7 है, 9 है. तो हम 9 को ही लेकर चलते हैं अगले 9 बुधवार, ये जो पहला चरण है. ओके. तो इसकी प्रस्तावना यह रहेगी सौरभ की थोड़ा सा इसमें गांभीर्य भी आए स्टूडेंट्स के बीच में. एंड maybe I will just open up the house for some questions or queries. Just tell me how this program is going to unfold. हर सेशन के बाद we would be giving a quiz. ऐसा डरिए मत कि कुछ बहुत ही हेवी होने वाला है, but just to keep the content. जैसे सौरभ ने कहा कि I am the story keeper, तो क्या वो घंटा 1.5 घंटा की मेहनत के बाद what we kept in ourselves, तो वो प्रश्न हम 3 स्तर के बनाने जा रहे हैं. अवेयरनेस के लेवल के कि कैरेक्टर कौन था उसको चिन्हित करना. इट इज जस्ट अ मेमोरी बेस्ड स्टफ की डिड यू कैच अप द characters and their narrations and whatever. And there will be some questions regarding their appreciation, like can you appreciate a bit more than the information. And last but not least, some open ended application issues कि अगर उस कथा में कोई एक philosophical द्वंद है, एक डायलेमा है, एक गुत्थी है, तो सबका जवाब उसमें अलग हो सकता है. कोई बाध्यता नहीं है कि ऐसा क्यों किया, आपकी दृष्टि में उसने वो सही किया या गलत किया. एंड सौरभ टेल्स वेरी वेल कि राइट और रॉन्ग भैया सबका अपना अपना है. देयर इज नो यूनिवर्सल राइट और रॉन्ग. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर फोल्कलोर्स कि हम सभी इस जागतिक जगत में, इन दिस लवली लाइफ, वी आर ऑल एक्सपेरिमेंटिंग अपॉन, वी आर ऑल लीडिंग आवर ओन इंडिविजुअल लाइफ्स. और डिस्क्लेमर की बात सौरभ ने कही, which was important, that it doesn't come from his employer or his alma maters or whatever. But then yes, it has been his personal life journey. यही passion है which he carries on. तो एक डिस्क्लेमर हम लोग भी रीथिंक इंडिया की तरफ से देना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर
जो भी टर्म्स टर्मिनोलॉजीज हैं उनको बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल लेवल पे एनंशिएट करना चाहते हैं. हमारा भाव यहाँ पर किसी को ऊंचा दिखाना, नीचा दिखाना, दिस वर्जन इज गुड, दिस वर्जन इज बैड, वो नहीं है. किसी फसाद में नहीं पड़ना है. बिकॉज देर आर मल्टीपल ट्रूथ्स, सबका ट्रूथ सही है. एवरी ट्रूथ इज परफेक्ट इन इट्स ओन सेंस. वेरिएशंस हैं कथाओं के, और उन कथाओं के वेरिएशंस को हम लोग प्रस्तुत करने का प्रयास है. व्यास हमारे पाणी हैं. सौरभ जिस प्रकार से देखते हैं, ये एक व्यास गादी की बात कहते हैं, तो व्यास गादी का एक सम्मान है कि जो वो कहते हैं उनकी अथॉरिटी है, उसको मानना न मानना, उसका क्वेश्चन करना, काउंटर क्वेश्चन करना, ये हमारी परंपरा का अधिकार सबको है. जो राइट ऑफ फ्री स्पीच की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ तो राइट टू क्वेश्चनिंग है. हमारे यहाँ तो परिप्रश्न सेवया की बात कही गई. देयर इज अ डिबेट एंड सौरभ ने नंबर्स की बात कही, तो वी टच इंफिनिटी. तो दिस ह्यूमन लाइफ स्पैन ऑफ आवर्स, एंड कोविड हैज अनफॉर्चुनेटली शोन अस द टेम्पोरलिटी ऑफ इट ऑल. तो दिखता है कि ये जीवन बहुत ही व्यापक है. इट गिव्स अस कि वी आर जस्ट ट्रैवलर्स इन दिस प्रोबेबली दिस लाइफ टाइम. काइंड ऑफ अ फिलोसॉफिकल अर्ज क्रिएट करने का हमारा भाव है. किसी रिग्रेसिव तरीके से नहीं. वी वांट टू बी मोर इन द कॉन्टेम्पररी नैरेटिव इटसेल्फ. बट हाँ, जहां दार्शनिक सत्य है वो है, तो उसको हम एंड एट द एंड ऑफ द डे कोई पॉन्टिफिकेशन नहीं है, कोई प्रीचिंग नहीं है. आपके सामने कथा लेकर आ रहे हैं, उसको आप गान कर रहे हैं, एंड देन लोड्स ऑफ क्वेश्चंस वी विल बी टेकिंग ऑन. तो आज अगर आपका कोई प्रश्न हो, बिकॉज बिना प्रश्न के हमारे यहाँ उपनिषद की परंपरा से लेकर और गीता के भाष्य तक 700 श्लोक में केवल कृष्ण नहीं बोले हैं, उसमें अर्जुन ने भी प्रश्न पूछे हैं. एंड दैट्स हाउ द डायलॉग गोज ऑन एंड ऑन. सो इट इज पाणी वाच, बट पाणी इज enunciating something, and we all will be having questions. So we will be giving you who will be participating in this. One of the write-ups, the links to it, आप लोग पहले से ज्यादा पढ़ लें तो अच्छा है. बट एक फॉर्मली हम लोग ट्यूसडे नाइट को एक राइटअप भेजेंगे, उसका आप पढ़ सकें तो पढ़िए. क्लास में पढ़कर आना अच्छा है. पाणी कहेंगे ही इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूडियस चैप्स वी हैव एवर मेट. तो उससे उसको समझना आसान होगा. And now the house is open another 3 to 5 minutes. Anyone who has a question, just come over, and we have our maestro, our Vyasa, Saurabh Pani to answer. And if some organizational issues, so we will answer to it. Yeah, please, it's open to all. Yeah. So Agle Wednesday, which is what, Saurabh? What you will be taking up? Next Wednesday would be we can 16th of June. Yeah, 16th of June. Yeah. So we will be taking the who started these stories. we can do 1 and 2 both, because 1 and 2 both. चलिए, सौरभ ने कहा तो 1 and 2 both can be taken up in that one. तो we'll share that along. और बहुत सारे इसमें से concepts आएंगे. उनके blog पे भी बहुत कुछ है. And we will be preparing a lot of add-on material. और जो pointers आपको मिले, you can just go and immerse yourself further into it. और then we will see कि how it unfolds. तो किसी को कोई प्रश्न हो तो most welcome. I would like to welcome another wonderful friend of mine, Professor Akhil Agarwal. Akhil used to be my classmate, and he has just joined in. He's a professor of biology, bioinformatics at Rajasthan University. So Akhil, any suggestions, any inputs you have, you're most welcome. Yeah, come in, Akhil. Hello, Raghav. Hi. Hello, Pani. It was a wonderful session. Today I feel like it was very good. And as soon as Raghav sent the link, I looked at your blog and I thought I should actually, attend this session. And I totally like it. One of the examples which you gave about the Adi Shesh and the Anant Shesh, Anant Nag or Anant Shesh, it was really good, right? When the remainder is left, that is also Anant. So you can understand how the traditional knowledge in our, in our Vedas, in our scriptures goes on, and how beautifully you explained that. Like even the remaining thing is so infinity, so infinite. So I really liked it, and I'm looking forward for all the sessions. And one more thing which I want to add is like initially that in our Guru Shish Parampara, this was a main mode of. I think he had a weak connection, dropped on. Yeah, no issues. Anyone else, please
Many of the newcomers. Yeah, storytelling. Yeah, Akhil is back. Yeah. I ordered. Yeah, Akhil, a bit of jitter is there. थोड़ा सा, but you are audible. Yeah. Okay, just hold on for a second. Probably I'm not at a good place where the network is there. So yeah. So is it okay now? Yeah, perfect. Please. Yeah. So actually, yeah, what was the thing is that that in our traditional Guru Shish Parampara, the storytelling was a mode of teaching initially, right? And with the time, it has been disappeared, right? And probably these sessions which are coming up will again ignite the way of teaching. Like I am a teacher, so I think always in a perspective of how to teach the student, and probably this. Perfect. So anyway, yeah, Akhil. Yeah, and probably this will help us, right. So I'm looking forward for the sessions. Great. Thank you very much, Raghav. Thank you, Akhil. Thank you. Look forward to have you, Ben. Yeah. क्योंकि बिना श्रोताओं के कथावाचक का ना मजमा नहीं जमता, कोई वाह बिल्कुल सही बात है। और जब ऐसा कथावाचक हो तो बात ही क्या है, मतलब एक सेकंड भी छोड़ना सार्थक नहीं होगा। Maybe Aradhya would like to say something. I would like all the participants to just speak on for a moment, because this should not be a monologue. This is the inaugural primer, so just come in if you want. And by the way, I take request कि अगर if you go and post anything on the blog कि ये लिख दो, मैं लिख दूंगा, है ना? So if you are interested in something, I take the request. लिखने की बात तो सौरभ, it's good. It's for the initiated ones. The whole idea is ये जो engagement है, कथाओं के माध्यम से जोड़ने का भाव जो है, and cross, because that will happen automatically. Once एक बार चस्का चढ़ जाएगा, एक बार उसमें रस आने लग जाएगा, तो everyone will just flock on to sauravkumar.co.in and just read up. एक जैसे हैरी पॉटर की कथा वो रहती थी कि भाई कब आ रही है, लाइन लगी हुई है, तो कब नई कथा आ रही है सौरभ भैया की, वो people will just flock for it. So anyone else, please, I would just request Abhaya Chibbar, maybe Anshika Sinha, just come in. Yeah, just unmute yourself. Yeah, please. Yeah, hi. This is Anshika. I'm a friend of Saurav's from school time, and I've been following his blogs for a while now. Hi, Saurav. First and foremost, I would really like to thank him for getting these stories started, because I think it was very badly needed for people like me who wanted to share something from our Indian stories with our children, but really didn't have the right knowledge base for sharing that. Because इतनी सारी कहानियां जो भी सौरभ लिखता है उसमें इतना कुछ नया है, और हर बार जब पढ़ो तो उसमें आप कुछ नया पिक कर सकते हो. So it's not just one level on which he writes. एक बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो तो कुछ नया सीखोगे, तीसरी बार पढ़ो कुछ नया सीखोगे. So I'm absolutely enjoying reading his stories. और ये यहीं नहीं रुकता है, क्योंकि ये stories मैं आगे अपने बेटों को भी सुना रही हूँ. And I can see that interest coming in them, because अगर वो स्टोरीज का 10% भी पिक कर लेना तो आई थिंक अ बिग जॉब इज डन, क्योंकि अभी तक उनको कुछ भी नहीं पता है. तो सौरभ, थैंक यू सो मच, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कीप रीडिंग योर स्टोरीज. Great. Thank you so much, Anshika ji, for coming in. Anyone else? Jivita Grover ji had a suggestion that if we don't post stuff on Tuesday, but maybe on a Monday. So let it be. Everything will be lifted off. It's an open book examination. It's an open book narration. Everything would be coming from sauravkumar.co.in. The idea is कि आज attention span इतना कम हो गया है कि एक दिन पहले अगर एक रात है कि भाई अगले 7 बजे हमें बैठना है, कुछ मजे की बातें कर रही हैं. We want it to be more fun. And सौरभ जब ये मग्न होकर अपनी कथाएं सुनाएंगे, he is not just a story keeper. He is a fantastic teller as well, and we have got junior Saurabh. Hi. So with us. So anyone else would like to just come in? You're most welcome. Just and we will then close today's inaugural primer. Yeah, please feel free to just come over. Yeah. तो सौरभ, लगता है सभी के प्रश्न आगे चलेंगे, तो कुछ क्लोजिंग नोट क्या कहोगे?
कुछ जाते Nothing. जाते कोई एक विजडम दे जाओ आज के लिए अरे एक भाई, हफ्ते। I would like to say one thing. हाँ। हेडिंग है विजडम वेडनेसडे, मैं विजडम नहीं देने आया हूँ, है ना। कुछ सीख पाऊं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि Love हर it. बार जब That मैं is स्टोरी लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे अपने कुछ नया मिलता है। lovely. एंड ट्राइंग टू that is the spirit, viewers. This is the spirit of the Indic Pantheon. कि यहाँ पे बड़े बड़े व्यास भी आए तो वो भी अपने निमग्न होकर की ये परंपरा से मुझ में डॉन अपॉन हुआ है, मैं मंत्र दृष्टा हूं, मैं मंत्र सृष्टा नहीं हूं। सो ये दैन्य की जो भावना है कि इट इज ऑल द लार्जर कॉस्मिक स्पेस, वी लिव इन द रिवर्बरेशन ऑफ इट ऑल। और ये कथाओं में हम देखेंगे कैसे दिस होल कॉस्मिक existence is intertwined, and we will learn from Saurabh, the पानी उवाच के अगले एडिशन में आप सभी का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। एक टेलीग्राम चैनल की बात हमने यहाँ लिखी थी जिसपे ये संबोधन चलता रहे, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें मैं दोबारा से उस लिंक को आप सभी को प्रेषित कर देता हूँ। तो एंड लेट्स मेक इट अ लाइवली conversational channel. Whosoever wants to join in, they are just most welcome to do so. Any questions, queries, let's flood it all, whatever comes to us. So बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, और we'll meet next Wednesday. And as Saurabh has said that who started these stories and how did it start and grow, तो we'll हम सुनेंगे ये कथा अगले बुधवार को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। Thank you everyone. Yeah, thank you so much.